गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कम फास्ट ज्वाइन फास्ट, चलो 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 जल्दी आ जाओ। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन फर्स्ट। So till now we have finished with the investment account. Last session was very important one because we have done the practice of investment chapter. Today we are going to start with the departmental accounts. We have 3 days to finish it. So departmental accounts बहुत easy chapter है, one of the small chapter. तो ये आज शुरू करेंगे departmental accounts and I am telling you this chapter is really very easy if you understand the format. So 100 pages के book में आपको जो लिखना है वो मैं बता के रखूंगा. So if you write this format in your 100 pages book, the questions are very similar questions. So friends, try to finish these questions as early as possible, and other students please try to understand, those who joined now today only, try to attend each and every session in the live one, so you will have the feeling of face to face batches. You can give comments from our board of studies app. तो आप सबको board of studies app से आना है. So before starting today's session, yes, first we will quickly revise our basic rules of accounts. So you are already aware about this traditional approach and modern approach. Traditional approach talks about personal, real, nominal. I am a follower of the traditional approach. Traditional approach, whenever you want to pass the entry, it is divided in 3 parts: personal, real, nominal. Personal is the debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver. Debtor becomes giver, creditor becomes receiver, and real account debit what comes in, credit what goes out, and nominal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. In case of modern approach, asset debit balance, liability credit balance, expenses debit, income credit, and capital credit balance. Friends, please try to follow my speed. यदि आप मेरा स्पीड मैच कर लोगे तो आपके 4 चैप्टर की रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी. यदि आपको समझ में आया है, इतना याद रखें, इफ यू फॉलो माय स्पीड बेटा, इट मींस you have done your regular revisions. Okay, so before starting today's session, first we will quickly revise our bonus shares chapter. Bonus shares chapter mein we have divided in 2 parts. One is a fully paid bonus shares, second one is a partly paid bonus shares. Fully paid bonus shares mein we have divided the entries. Yes, beta, capital redemption reserve account debit, there are 2 entries: capital redemption reserve account debit, security premium account debit, general reserve account debit, P&L account debit to bonus to equity shareholders, bonus to equity shareholders account debit to equity share capital. In case of partly paid bonus shares, there are 3 entries. Number 1 is a general reserve account debit, P&L account debit to bonus to equity shareholders, final call account debit to equity share capital, and last entry will be the general reserve account को cancel, bonus to equity shareholder को cancel करेंगे. So bonus to equity shareholder account debit to equity share capital. Redemption of preference shares बेटा, we have divided in 2 parts. One, we have to maintain our capital structure, and second one is your redemption entry. So redemption entry is better preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference shareholders account debit to bank, and last entry will be P&L account debit to premium on redemption. Remember, to maintain your capital structure, you have 2 options. One is a equity share option, second one is a CRR option. So equity share option, bank account debit to security premium, and general reserve option P&L account debit to CRR. आपके उसके बाद तीसरा एंट्री हमने क्या देखा था बेटा, बोनस डिवेंचर्स में इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: अलॉटमेंट, रिडम्पशन एंड बेटा फाइनल कॉल, ओन डिवेंचर्स. सो रिमेंबर, in case of allotment, first entry will be allotment of shares. Means every year you are going to pass entry. First is that DRR account. DRR is P&L or general reserve account debit to DRR. After that, interest account you are going to receive. So DRR investment you are done. So DRR investment account debit to bank, and you will receive bank account debit to interest on that, and that interest is transferred to P&L. So interest to P&L. Debenture interest is your expenditure. So interest account debit to debenture holders, and debenture holders account debit to bank. In case of redemption, there are 4 entries. First entry will be you will sell that debenture redemption investment. So bank account debit to DRR investment. You may have losses. So P&L account is debited, P&L account is credited in case of profits. After that, debentures entry, redemption की debentures की entry, debentures account debit to debenture holders, and debenture holders account debit to bank. And DRR you don't have to maintain it now. So DRR account debit to general reserve. Okay. After that, beta, own debentures account debit, P&L account debit to bank to profit on cancellation. Own debentures to bank, and then cancellation entry will be debentures account debit, P&L account debit to own debentures to profit on cancellation. So very easy entries. And investment account is divided in 2 parts. One is equity shares, and second one is debentures. In case of equity shares, you have to maintain columns or like serial number, date, particulars, number of shares, and rupees, date, particulars, number of shares, and rupees. And after that, beta, in case of debentures, date, particulars, face value, then you have interest column and then rupees column. Follow Guru Mantra series on my channel, और otherwise मैं गुरु मंत्रा सीरीज देखता हूँ, ऐसे आके पूछ के हम लोग गुरु मंत्रा सीरीज इस पे भी डाल देंगे. तो गुरु मंत्रा सीरीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक. यस, कितने लोगों ने मेरा स्पीड मैच किया? चलो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सर वी मैच योर स्पीड करके.
चलो कितने बच्चे थे जिन्होंने स्पीड मैच किया? चलो जल्दी से आ जाओ। से गुड मॉर्निंग नूर जी, कार्तिका, उत्सत सिंह, किरण बेटा, दीक्षा, शाजिया, सनकारण जी। यस बेटा, सनकारण आफ्टर सो मेनी डेज। भूमिका बेटा रेगुलर स्टूडेंट, विघ्नेश रेगुलर, पुनीत रेगुलर, कांचन रेगुलर, ईशान, रितिका, राजू कुमार। चलो गुड मॉर्निंग बेटा, लोगा सुंदर जी, अमल, जिया पटेल, शुभम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सबके नाम तो नहीं लेके बैठूंगा। यस बेटा चलो। नितिन शुक्ला गुड मॉर्निंग बेटा, निकिता गुड मॉर्निंग बेटा। चलो अभी आज से नया चैप्टर शुरू हो रहा है एंड प्लीज डोंट मिस नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट बेटा कुछ भी होने दो, ब्रांच अकाउंट को मिस नहीं करना है। यस, बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप थ्रू आना बेटा जल्दी से। यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप। आप लोगों को मुझे मेरे साथ बातें करनी होगी थ्रू कमेंट सेक्शन। तो आप बोर्ड ऑफ स्टडीज ऐप को फॉलो कीजिए। चलो आज तो नया चैप्टर है, सो मेनी स्टूडेंट्स विल अटेंड इन द लाइव। यस, वेरी गुड। सो आज तो नया सेशन रहता है, तो आई हैव सीन दैट फर्स्ट डे ऑफ द सेशन नॉर्मली स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग इट इन द लाइव वन, एंड आफ्टर दैट बेटा फिर एक दिन के बाद क्या होता है, दूसरे दिन नींद नहीं खुलती, और नींद नहीं खुला तो बेटा आप लोग छोड़ देते हो लेक्चर। ओके, सो प्लीज डोंट डू दिस थिंग्स। रेगुलर कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कभी भी चैप्टर शुरू होने के बाद भी आपको रेगुलरली अटेंड करना है। चलो 7:10 हो चुका है, 7:06, 5 मिनट्स में हमने क्विक रिवीजन किया। एंड नाउ यस बेटा, बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा रहेगा, बट नाउ टुडे नहीं, अभी वो नेक्स्ट सेशन में बैलेंस शीट प्रोफॉर्मा। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेगुलरली वॉचिंग गुरु मंत्रा सीरीज? कितने बच्चे हमारे प्यारे प्यारे जो गुरु मंत्रा सीरीज देखते हैं? टेल मी इट इन द कमेंट सेक्शन। एक ही मिनट ना मेरा। यस, वेरी गुड। Diksha is saying, sir, your sessions are always amazing. I don't miss a single session. Very good, beta Diksha. Chalo, departmental accounts. Let's start with today's chapter, which is departmental accounts. So why this chapter? Before starting any session, first you ask to yourself, why departmental chapter? See, whenever I'm doing some work in our beta, in real life also, okay, in our family we all of having some beta, some type of working we have allotted beta. Okay, for example, now my wife is also a chartered accountant, she has more responsibilities, so we have divided our responsibilities in 4 5 parts. Number one, I have responsibility of this client building plus teaching, so that responsibility to earning good money is my responsibility, correct hai? Now my wife responsibility beta, what is the responsibility? Yes, मेरे बेटे का care लेना, so taking care of my child plus beta she is also working, so उसको तो ज्यादा responsibilities है. My mom normally she takes care of my home beta, and second one, yes, इधर उधर की बातें करना, वो responsibility हमने सब उसको दे दी है. And last बेटा, मेरा बेटा, उसको मैंने responsibility क्या दी है कि you do study and regularly play your गेम्स, एंड बेटा प्लीज एटलीस्ट हैव सम, कैसा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा हो, ये हमने उसको टारगेट दिया हुआ है. सो दीज आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव डिवाइडेड ओवर इट, करेक्ट है? नाउ व्हाई आई एम गिविंग यू दिस नॉलेज? हाँ, सो सपोज इफ देर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिवाइडेड, कुछ भी चल रहा है घर में, तो बेटा व्हाट हैपन, देयर विल बी all mess up beta. Okay, so that's why we are doing departmentalization into the business also. So in business also we are doing this departmentalization, means we have different cost centers, we will divide our activities in 4 5 parts. Okay, for example, suppose if I'm a manufacturer of cloth, okay, garments, so manufacturing is of garments, so I will have cloth department separately,
which will do the purchase activity. One is a stitching, and third one means where beta normally my manufacturing process is done, and one department is a selling department. So we have divided all these departments into different departments. So these are some responsibility centers, okay, cost centers. Now these are some costing terms. You are going to understand it in the costing subject, so don't worry. डिपार्टमेंटल अकाउंट्स क्या होता है, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में बात करना होगा. तो we have divided our business activities in different parts. Okay. So, yes. तो सबसे important departmental accounts is nothing but our business consists of several independent activities. So this is the first one, and therefore we have divided in the different departments. So bas ho gaya. This is only the knowledge that you want. So our business is divided in different activities. So we have divided our activities in different departments. Now what are the advantages? Advantages are very simple, sir. You can evaluate department wise performance. So in my example also, if I am not doing my work properly, so my wife will tell me definitely ki please do your activities regularly. So this is how we are going to evaluate our performance. Growth potential of each department, okay. Justification, so each department has capital outlay, justification of capital outlay. Judgment of efficiency and planning and control is possible. If there is departmentalization, planning and control is also possible. So friends, these are some advantages. Evaluation of performance, department wise, growth potential of each department. I don't think there is need of any explanation. You are getting it from the heading itself. Justification for capital outlay, judgment of efficiency and planning and control. Okay. So what is the difference between departmental and branch? Beta, difference is very simple. Departmental, you know, branch is extension of your business. So all activities are going to happen in the branch also. Okay, branch and department. Department में क्या होगा? Every department has its own, you know, unique identity. So branch is different. Head office work which is going in the head office is also same work is going in the branch. Okay, only some work better head office has some more responsibilities, but almost buying and selling of goods are always done with head office also and branch also. So branch और head office के work में similarity है. In departmental accounts, every department it has own style of beta or own working. Okay, every department is having own working. So that is the difference between A department does not have same activity like B department. But in branch, what happens? Head office and branch has some regular same activity. So you can write this thing. Yes, good question. So what is the difference between branch and department? See, department में what is the difference? Departments is having different activities in each department. Branch and head office may have some same activities. It is the extension of your head office. Okay, so that is the basic thing difference होगा. तो branch में और head office में क्या difference है? एक बार हिंदी में head office में जो काम चलते हैं वही branch में भी चल सकते हैं. हेड ऑफिस में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ब्रांच में थोड़ी कम होगी. बट इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल, एक डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट का कोई संबंध नहीं होगा. और इतना याद रखो, एक डिपार्टमेंट का काम और दूसरे डिपार्टमेंट का काम ये अलग अलग रहेगा. यू गॉट द डिफरेंस? चलो जल्दी से बताओ. यू आर गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन ब्रांच एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन? ओके, ठीक है. डिपार्टमेंट इज डिफरेंट. हेड ऑफिस का सवाल ही नहीं आता है डिपार्टमेंटल में. ठीक है. नाउ मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग. नाउ व्हाट आर द मेथड्स? अकाउंट्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स आर केप्ट इन वन बुक ओनली. तो एक ही बुक में पूरा अकाउंट्स रखना है. ओके. फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू बी सेपरेटली रिकॉर्डेड इन सब्सिडरी बुक्स, and then for them to be accumulated under separate head in a ledger or ledgers. This may be done by having columnar subsidiary books and columnar ledgers. Okay, so here all departments are kept in one single book, and separate book
are kept for each department. So beta, these are the differences. So you can see here, what is the difference? One book, separate book. ठीक है, सेपरेट बुक. हाँ, ब्रांच में डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट. यस जगत बाबू जी, same as branch accounting. Next chapter is very important. Don't miss the next chapter. It's very, very important. Some students are watching this series. It's like revision batches. How many of you have May attempt? May exam? Can you tell me how many of you are having May exam? Many students are having May exam, beta. Okay, and those are also watching my sessions like revision. Okay, good. चलिए. So request to all of you, beta, please watch 6 number के sessions also. The batch number 6 in which I have covered, scanner questions. And for this batch we do not have time, so I am going to give you recorded lectures for scanner questions. तो मैं आपके लिए scanner questions के recorded lectures देने वाला हूँ. या second option that I will have कि I will take this in the live sessions. Okay. Okay, many students is having, they are having बेटा May exam. ठीक है, कोई बात नहीं. Good that you are doing revisions. चलिए, basis of allocation. Now beta we will take solve one problem for basis of allocation. So you will find it easy. चलो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 3. You will find this question very easy. I will tell you the shortcut of calci also. आज हम लोग calci का shortcut भी समझ लेंगे. Okay? So calci shortcut बेटा, yes. Next. Messrs Omega is departmental store having 3 departments. कौन से डिपार्टमेंट्स है? 3 डिपार्टमेंट्स XYZ. The information regarding 3 departments for the year ending 31st March are given below. Opening stock. But where to write opening stock? On the debit side. Okay. Purchases. Purchases also debited. But a question to question, I will explain you the theory. Theory I will explain you through questions. Okay. Debtors at the end. Let's see why debtors are given. Sales, credit side. Closing stock on the credit side. चलो एक काम करते हैं. We'll solve this question in your notebook. आ जाओ. नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं. Yes, write down बेटा. Messrs Omega, take on 2 pages. 2 pages पे लिखिए. Messrs Omega. Take on 2 pages. Write down in your 400 pages book. Departmental trading and profit and loss account. Particulars on left hand side page. Particulars. Basis. Particulars. Basis. X, Y, Z and total. Write properly. Particulars on right hand side. Basis. X, Y, Z and total. X, Y, Z and total. Draw fast.
चलो ड्रॉ कीजिए एंड टेल मी ओवर इन द कमेंट सेक्शन. Tell me over in the comment section. चलिए drawn. Okay, write down two opening stock. Two opening stock given. कितना ओपनिंग स्टॉक है बेटा? चलो मेरे बच्चों बताओ. 36, 24, 20. 36,000, 24,000, 20,000. 36 plus 24 is 60. 60 plus 20, 80. 80,000. करेक्ट है. इट्स वेरी सिंपल. परचेसेस. चलो परचेसेस इज ऑल्सो ऑन द डेबिट साइड. करेक्ट है. इज माई एक्सपेंडिचर given. Yes, 1,32,000, 88,000, 44,000. We'll take a total at the end on calci. Calci end में use करेंगे. Debtors बेटा balance sheet. So we are not going to write debtors. By sales. By sales is also given बेटा. 1,80,000, 1,35,000, 90,000, and total we'll take it later. Closing stock. चलो closing stock थोड़ा नीचे लिखो. By closing stock given 45, 17.5, 21. 17,500, 21,000. Now beta, furniture, floor space, number of employees and electricity. All these are apportionment basis. Apportionment means to divide your common expenses. To divide your common expenses. What is apportionment? To divide common expenses in this ratio. In this ratio, that is called as apportion. Where you will get this word beta? You will understand this word in overhead chapter of costing. Costing में आपको ध्यान में आएगा. Now carriage inward. Now what is carriage inward beta? Carriage inward is on purchases. When you buy something, when you purchase something beta, you have to pay this carriage inward. Okay, traveling expense जैसा. Freight. So you have to divide it in the purchases ratio. Chalo. So carriage inward, write down 2 carriage inward. What is the total? 3,000. Don't use calci now. And what is the ratio? Ratio is purchases. कौन सा ratio है? Purchases ratio. Now what is purchase ratio beta? 132 is to 88 is to 44. We'll do it later. Okay, we'll do it later. Don't worry. So carriage inward.
Next one, carriage outward. Carriage outward beta distribution expenses. So carriage outward is always based on sales ratio. Sales ratio. So to carriage outward. To carriage outward. Sales ratio. What is sales ratio? 180, 135, 90. 135, 90. And what is the total? 2700. So in total, I will write 2700. It's very simple to carriage outward. Okay. Next expenses. Salary. Next expenses is salary. Two salaries. Two salaries, beta. Now see the basis. Number of employees. Which is the basis, beta? Number of employees. 20, 25, 20, 15, 25, 20, 15. Number of employees. Number of employees. Easy है. Salaries. Next. 2. Yes, beta. Advertisement. Now you only tell me. Advertisement के लिए कौन सा रेशो लू? Advertisement, you only tell me. Advertisement, which ratio? Yes, beta, which ratio? Sales. Very good. So advertisement will take sales ratio. Sales. Now what is sales ratio, beta? 180, 135, 90. And what is the total? 2700. अच्छा, ये 48,000. This is 2700. Discount allowed. Discount allowed. To discount allowed is also sales ratio, beta. Now you may have some confusion. ICI को चाहिए, SS को पूछा तो डेटर्स इज अ करेक्ट वन. डिस्काउंट अलाउड डेटर्स पे आना चाहिए. बट ठीक है, आईसीआई के हिसाब से जाएंगे. आईसीआई इज गिवन इट इन द सेल्स रेशियो. ओके, आईसीआई ने सेल्स बोला है, बट डेटर्स आर ऑल्सो गिवन एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू डेटर्स. ऑलवेज अलाउड टू डेटर्स. इफ यू आस्क मी तो डेटर्स को आएगा. सो देयर इज अ कंफ्यूजन. Yes, what is the amount? 2250. Next one. Next is discount received. Credit side. Second line. By discount received. Ratio purchases, because we do not have creditors. 132 is to 88 is to 44. Ratio is 132, 88 is to 44. Purchases. Which ratio, beta? Purchases ka ratio. Next, very good. Chalo, next one. Rent, rates and taxes. 2. Rent, rates and taxes. Now see, rent, rates and taxes ratio will be, yes, now you only tell me ratio. चलो कौन सा लेंगे रेंट के लिए? टेल मी बेटा. फर्नीचर, फ्लोर स्पेस, एम्प्लॉइज और इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम. चलो जल्दी से बताओ. ओके, इट्स वेरी सिंपल. रेंट इज फ्लोर स्पेस. Floor space. Now what is the ratio of floor space?
30, 25, 20. 30 लास्ट के 2 zeros उड़ा दो. 30, 25, 20. Okay. Floor space. Depreciation on furniture. To depreciation. So bracket में furniture. What is the ratio? 2:1. 2:1. Electricity expenses. To electricity expenses. What is the basis, beta? Electricity expenses. Electricity consumed. Electricity consumed. So what is the ratio? 3:1. 3:1. Next one. Labor welfare expenses. But I forgot to write rent. 7,500, 1,000. And electricity expenses 2,400. Next is to labor welfare expenses. $2,400. Sorry, electricity expenses is 3,000. And labor welfare expenses is 2,400. Number of employees 25, 20, 15. Correct है बेटा? Number of employees. And provision for bad debts. Debtors is important. To provision for bad debts, 5% into debtors. Okay. And discount received कितना था रे बेटा? Discount received 1,800. Chalo. Now take calci. Now take calci. Yes. Please don't do it on mobile. Mobile does not have any shortcut. So mobile पे मत करना. Okay. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 3,000 बराबर लिखा ना अभी. हाँ, चलिए. नाउ फर्स्ट टेक परचेसेस की टोटल 132 प्लस 88 प्लस 44, 2,64,000. देन टेक सेल्स का टोटल 180 प्लस 135 प्लस 90. 3 zeros लास्ट के स्किप कीजिए. टू इंप्रूव योर स्पीड लास्ट के 3 zeros डोंट कंसिडर. So how Sanket sir improves his speed? 45 plus 17.5. Better after comma point दे देना. Plus 21. So I am getting 83.5. So 83,500. Increase your speed of calci. Now see what is the carriage inward purchases. Now what is the total of purchase? Purchase 2,64,000. So here I can write 264. Okay. So 264. So how to do this on calci now? Let's take on calci. See, क्या करना है आपको? Your amount is 3,000, correct? 3,000 divided by total. Now calci can remain this thing. Okay, तो calci के बेटा in memory is already substituted
तो क्या हो जाएगा 3000 डिवाइड बाय 264 इनटू कैल्सी ऑलरेडी रिटेन करता है एंड नाउ जस्ट प्रेस 132 इज इक्वल टू 88 is equal to and 44 is equal to and you will get the answer. So calci पे 3000 divided by 264 into 132 you are getting the answer 1499.99. So 1500. 88 is equal to 999.99. This is 1000 and 44 is equal to 500. This is a shortcut of calci. Direct entry students. Carriage outward. Now what is the total beta sales ka? Sales ka total is 4,05,000. So here total is 405. You can write over there. 405 is a total. Or you can write यहां पे भी लिख सकते हो. Total is 105. जगह होगा तो. So 405. Now how to do the calculation? 2700. ये कैल्सी के दिमाग में रहेगा. 2700 divided by 405 into what is the ratio? 180 is equal to, ये बैठ गया कैल्सी के दिमाग में, 180 is equal to 135 is equal to and 90 is equal to. So calci is very easy beta. Use calci shortcut. 2700 divided by 405 into 180 is equal to, I am getting the answer 12199.99. So this is 1200. Then you have 135 is equal to 900 and 90 is equal to 600. So this is a shortcut of calci. Salary. Now what is the total? Salary ki total lo 25 plus 20 plus 15. 60 is a total. Correct है? कैसे लेना है कैल्सी पे? 48,000 divide by 60 into 25 is equal to. Directly answer 20,000. Then 20 is equal to 16,000 and 15 is equal to 12,000. Sales का total कितना लिया था? 405. 405 is a total. So same answer na, 2700, 2700. So same answer. So 1200, 900, 600. Discount allowed. Again sales ratio 405. So take on calci 2250 divided by 405 into 180 is equal to 999.99. So 1000. 135 is equal to 749.99 means 750 and 90 is equal to 500. Rent is 30 plus 25 plus 20. 75. So what is the total? 75. 75 means 2 0 add करने हैं फिर. So without calci now. Without calci you just have to add 2 zeros. 75 में 2 zeros add किए. वैसा 30 में 2 zeros add किए. 3000 without calci. 2500 and 2000. Okay. Here it's a 5. So 1000 divided by 5 into 2 is equal to 400, 400 and 200. Simple. 3 plus 2, 5 plus 1, 6. So 3000 divided by 6 into 3 is equal to, this is 1500, 2 is equal to 1000 and 1 is equal to 500. So simple, sir. Number of employees, so 60. 2400 divided by 60 into 25 is equal to 1000. 20 is equal to 800. How many of you got the first time logic of calci beta? कितने बच्चों को? Yes, first time they understood shortcut of calci. Write it in the comment section. Yes. Please don't use Casio calci. It's request because in that you have into function 2 times you have to do this. So I will request you all never use Casio calci. Use citizen or pat, कोई भी calci use करो, but जिसमें ये function use होता है. You please go to your shopkeeper beta. Please see this function is working or not. Normal calci beta, Casio calci कभी use मत करना. Okay. Casio calci has this function
Divyaji is very simple. Navneet Krishnan, this is Calci shortcut. Those students who have Calci, Casio का Calci, please बेटा, yesterday only एक हमारे पिंपरी चिंचवड ब्रांच के बच्चे को मैंने डाटा उसके वजह से यूज, बिकॉज यू ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट कैल्सी का कैसियो प्रॉब्लम, सो डोंट यूज कैसियो कैल्सीज, ओके, यू वोंट गेट दिस आंसर्स. This is 264. 1800 divided by 264 into 132 is equal to 899.99, मतलब ये आया आपका 900. 88 is equal to 600. 44 is equal to 300. And 5% on debtors. So debtors, now what is 5% beta? 0.05. 5% is 0.05. Here also you can use shortcut. 0.05 into 15,000 is equal to, so what is the answer beta? 750. Then 10,000 is equal to 500. So 1750. And now you can calculate GP. Is your homework. GP balancing figure by GP brought down as above, and to net profit carried down, balancing figure. Okay, do this working at home. You understood it? You can take a screenshot if you want. Yes, you can take a screenshot and do your GP and NP calculations घर पे कीजिए by your own. Beta, you have to improve your speed. Divya is saying, sir, I'm not getting this speed. No, beta, you have to do this speed. बेटा पुनीत, कैल्सी का शॉर्टकट होता है, एक बार हिंदी में बता देता हूं. कैल्सी का शॉर्टकट क्या है बेटा पुनीत? पुनीत, इसका एक तो पहले तो आपको बेसिस डिसाइड करने पड़ेंगे. कैरेज इनवर्ड का बेसिस परचेस रेशो है, कैरेज आउटवर्ड का सेल्स रेशो है, एडवर्टाइजमेंट का सेल्स है. कैरेज इनवर्ड क्यों बेटा? कैरेज इनवर्ड परचेस के टाइम पे करना पड़ेगा. कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब जब आप सेल करते हो. अभी ये डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, इसलिए P&L में जाता है बेटा कैरेज आउटवर्ड. फिर सैलरी, सैलरी किसके ऊपर बेस करेगा? तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. एडवर्टाइजमेंट हम लोग सेल करते हैं. रेंट फ्लोर एरिया. तो बेटा ये जो खर्चे है ना, ये 2700, ये रेशियो में डिवाइड करने हैं. इट्स कॉमन एक्सपेंसेस डिवाइडेड इन ऑल. सो अभी हमने कॉमन एक्सपेंस को क्या किया? वी हैव डिवाइडेड इन द सेल्स रेशियो. नाउ व्हाट इज सेल्स रेशियो? सेल्स इज 180, 135 एंड 90. ये रेशियो लास्ट के 3 zeros उड़ा दिए. समझ में आया बेटा? एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल. क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सो एकदम इजीली करो. 180, 135, 90. अभी ये रेशियो में आपको डिवाइड करना है, तो ये रेशियो में डिवाइड करना होगा 2700. तो तुम क्या करोगे बेटा? 180, 135, 90 के रेशियो में डिवाइड करना है. तो 405 इज अ टोटल. सो कैल्सी पे क्या करना है? 2700 डिवाइड बाय 405 into 180 is equal to 135 is equal to and 90 is equal to. खत्म. You will get the answer. किरण शुक्ला. डेटर देखो बरकतुल्ला, 5%. 5% अभी सब पे लगाना है कि नहीं बेटा? 5% के बदले में मैंने क्या किया? आई हैव 5%. हाउ यू कैन टेक ऑन कैल्सी? 5/100, दैट इज 0.05. सो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय ऑन एवरी डेटर्स. तो बेटा डेटर्स कितना है आपका? Your debtors is 15,000, 10,000 and 10,000. So instead of doing 15,000 into 5%, I have taken 0.05 common. Common किया and Calci का again shortcut. 0.05 into, it's a common. Then 15,000 is equal to 10,000 is equal to and 10,000 is equal to. So simple, my friend.
आज थोड़ा मेरा तबीयत डाउन है ड्यू टू चेंज इन द वेदर, बट ठीक है, फिर भी आपके लिए मुझे कोई टेंशन नहीं आपको मिलने के बाद। And yes, Casio may give you this shortcut, but some Casio Calci, yes, beta, they do not give this shortcut of Calci. Okay, today, please change your Calci because in financial management also, we need more and more Calci functions. So I request you all to have proper other than Casio calces. I'm not better promoting any other calces, and I'm not in the ये ऐसा भी नहीं है कि सर वाई यू रिजेक्टेड कैसियो, आप क्या कैसियो के अगेंस्ट हो या कैसियो ने केस किया है? नहीं बेटा, कैसियो कैल्सी का एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। ये मैं भी जानता हूं कि कैसियो के कैल्सी अच्छे हैं बाय बिल्ड क्वालिटी, बट बेटा अल्टीमेटली वी हैव टू यूज शॉर्टकट्स, ओके? और ये शॉर्टकट्स नॉर्मली सम कैसियो कैल्सी हैव दिस फंक्शन, सम कैसियो कैल्सी डू नॉट हैव दिस फंक्शन। अभी सुधांशु शेखर बोल रहे व्हाई दिस प्रोफॉर्मा इज इन टू पार्ट्स। अरे सुधांशु, ट्रेडिंग इज डिफरेंट एंड पी एंड एल इज डिफरेंट। ये इतना वाहियात क्वेश्चन क्यों पूछा बेटा आपने? ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू गुड्स एंड पी एंड एल इज रिलेटेड टू अदर देन गुड्स खर्चा। ट्रेडिंग में वी आर ऑलवेज बेटा थिंकिंग अबाउट गुड्स रिलेटेड एक्सपेंडिचर। यस, ठीक है। शुड आई मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा? टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी कैल्सी शॉर्टकट, यू कैन आस्क मी बेटा, प्लीज जल्दी से बताओ। कैल्सी का कुछ भी दिक्कत होगा तो। दिस इज योर आंसर। दिव्या इज सेइंग सर नाउ आई एम गेटिंग द आंसर। गौरव कुकरेजा इज सेइंग सर फाइनली एबल टू अटेंड योर लाइव सेशन। अरे गौरव, 7 बजे उठना डेली, उसमें क्या नई बात है यार? उठना ही पड़ेगा। केतन पटेल इज सेइंग सर 12th में था ये। वाह, डे बाय डे, यस, मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग नाउ। गुड गुड। चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। So it's easy, sir. Common expenses has to be divided in the different parts. Yes. Now I'm going to explain you very, very important concept of departmental accounts. Departmental accounts का MU function क्या होता है बेटा? No use. राहुल जैन, MU function no use. There are some calci functions. Tax का function at least accounts में use नहीं होगा. You can use it like slab rates. Okay. तो टैक्स का फंक्शन भी मेरे लिए यूज नहीं है। अंडर रूट इज इंपॉर्टेंट, एम प्लस इज इंपॉर्टेंट, एम माइनस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड मेमोरी रिकॉल। ठीक है, चलो नेट प्रॉफिट और जीपी खुद से कैलकुलेट करो। श्रीलक्ष्मी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। जब तक आपको ज्ञान दे रहा था श्रीलक्ष्मी ऑलरेडी कैलकुलेटेड। ओके, गुड। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डैड सन कॉन्सेप्ट is very important. Now, please be focused for next 15 minutes. I'm going to tell you the crux of this concept. Okay, मैं आपको ये concept की crux बता रहा हूँ। डैडसन concept समझ में आया तो पूरा डिपार्टमेंटल इजी हो गया बेटा। डिपार्टमेंटल इजी करना है तो डैडसन concept समझ में आना चाहिए। डैडसन concept is not only important in this chapter, it is important in process costing, in costing। तो बेटा costing में भी important है डैडसन concept, तो इसको बिल्कुल भी भूलना मत, because it's a concept is important in branch accounts also। तो आज जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं, वो पूरा का पूरा ध्यान रखना। व्हाट इज अ डैडसन कॉन्सेप्ट? डैडसन कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। यस,
ठीक है, चलिए। सो डैडसन कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज suppose suppose this is dad account. Dad bought some goods from the market. Suppose dad bought 10 pens. 10 pens. Assume he bought it at rupees 10. So his purchases is 100 rupees. Any difficulty in this? No sir. Dad ने 10 पेन्स खरीदे 10 रुपए में. Now बेटा, he is doing internal transfer. Internal transfer to son. What is called as by son? This is called as internal transfer. Okay, internal transfer. In the same home beta they are living. So he transferred to son, but what at what price? He transferred, though he is his son, he sold it to his son, that pens at rupees 12 per pen. कितने में बेचा? 12 rupees में. So 10 pens he sold at rupees 12 sir. 12 रुपए में बेचा सर. 12 रुपए में 120 रुपया. Now tell me whether this is actual profit. No sir, this is internal profits. Internal transfer, internal profits. So to profit of rupees 20, but I can't say this is a profit. This is internal profit. Okay, this is internal profit. When we can call it as total profit? When beta, when profit is not earned to by selling it to son, but son sold it to someone outsiders. Okay, जब बेटा उसको बाहर बेचेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे. So two purchases. Now purchases from dad. So internal transfer ही होगा from dad. At what price beta? 10 pence at 12 rupees. He got it at 12 rupees. So for him purchases is 120. Okay, very simple till now. Dad ka sales will be son ka purchase. That is the internal transfer. And now son sold it to outsider by sales. Now son sold it to outsiders at rupees 15. At rupees 15. 8 pen becha. How many pens he sold? 8 pens at 15. You are getting this concept? Very easy. So tell me, son left with beta how many pens and at what price? Son left with, yes beta, how many pens? मुझे बताओ. डैड को ये बेचा उसने 8, सॉरी डैड ने 10 पेन्स बेचे, सन ने 10 पेन्स खरीदे, उसमें से 8 पेन बाहर वालों को बेचे, आउटसाइडर्स को, सेल्स टू आउटसाइडर्स. So he left with how many pens beta? He left with how many pens? Yes beta, Debarjun, very good beta. Sorry sir, I am not able to attend your today's class live because I have my physical tuition of BCom. Don't worry, जाओ. चलो, no problem. At least you asked for the permission. Good beta and really sincere students. Those who are not, मतलब I know कि you are not 11, 12 standard students or school students, but if you take permission, it's like beta you assume कि संकेत सर हमारे साथ सदा है, हमेशा के लिए, और मैं हमेशा अटेंड करना ये सेशन, तो अच्छा लगता है मुझे भी. इफ यू आर अटेंडिंग इट इन द लाइव बाय योर नेम आई कैन यू नो ये होता है, मुझे नाम याद हो जाते हैं मुझे. नाउ आई नो ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स नेम, दोज हु आर रेगुलरली अटेंडिंग. यस, कितने पेन से बेटा? हाँ, वेरी गुड. हु आंसर वेरी फास्ट रे? अक्षय कुमार, 2 पेन्स एट रुपीज 10. नहीं, हिमांशु नहीं बेटा, 10 रुपए में नहीं. सन को कितने में आया?
सन को कितने में आया बेटा? सन को 2 पेन्स आए कि नहीं 12 रुपए में? सन विल रिकॉर्ड इट एट 12. व्हाई ही विल रिकॉर्ड इट एट 10? ओके, सन कितने में रिकॉर्ड करेगा? बरकतुल्ला, यस करेक्ट है, 24 रुपीज में इज गोइंग टू रिकॉर्ड. सो हिमांशु का आंसर गलत हुआ. 2 pens are pending at rupees 12. Very good, very good. Everyone answered 12 rupees, 12 rupees. Very good. So Sun left with 24 rupees ka pen. How much Sun earned, beta? Yes. See, profit is always on sales. 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 Sir, इतनी बार repeat किया, important है. Whenever I am repeating it for 3 to 4 times, it's always important. प्रॉफिट કેટલો છે? પ્રોફિટ છે 15 રૂપિયા में 12 रुपया is a cost. So for Sun, profit is rupees 3. On how many pens? Beta 8 pens. He sold 8 pens, always on sold, not on purchase. So he earned 24 rupees. See, your balancing figure you can take it as, and this is your cross tally. This is your cross tally, that he sold 8 pens and he earned 3 rupees. So your cross tally, so whether it is tallying, yes sir, 144. Now tell me what is total profit? Total profit. Total profit is of dad 20, son 24. So total profit is 44. Now out of that, what is actual profit? What is actual profit? Yes, now you only tell me. What is the actual profit? Chalo, batao. What is the actual profit? When actual profit we can call it as when it is sold to outsiders. जब actual profit is always earned from outsiders. So actual profit कितना है? बताइए मुझे. Actual profit कितना है? Not 24, not 24. Actual profit, overall profit. Gaurav answered it correctly. गौरव ने आंसर करेक्ट दिया. बेटा एक्चुअल प्रॉफिट इज 8 pence into 15 rupees minus 10 rupees. So actual profit is rupees 40. And which is not the actual profit. We call it as unrealized profit. And in other language, it is also called as loading. Loading भी बुलाते कुछ लोग इसको. So what is the unrealized profit? Tell me. Unrealized profit is rupees 4. And why this unrealized profit is there? Now you only tell me why this unrealized profit. चलो बताओ. So actual profit is only for outsider. Sir, outsider को कितने पेन्स बेचे? 8 पेन्स. 8 पेन्स कितने में बेचा? 15 रुपए में. लिया था कितने में? अरे भाई डैड ने लिया था ना 10 में, सन ने लिया 12 में, वो छोड़ दे. डैड ने कितने में लिया था? सर डैड ने लिया था 12 रुपए में, 10 रुपए में, 10 रुपए में लिया था सर. यस सर, यस सर, यस सर, वी गॉट दिस. यस सर. Why there is unrealized profit? Now this is important in departmental accounts में IMP concept. डिपार्टमेंटल में आईएमपी कॉन्सेप्ट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4 रुपया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है. कैसे आया सर 4 रुपीज? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए. हाउ टू कैलकुलेट दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? व्हाई दिस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? व्हाई दिस 4? लुक इन द क्वेश्चन. yes, you will get the hint. Something is different. Why this 4 rupees profit? You only tell me. Oh ho. Sir,
this 12 rupees and 2 pence. Receiving department. Receiving department. See the sentence. Sir, receiving departments. Receiving department. Opening stock. Now in this question there is no opening stock. And closing stock includes unrealized profit. Oh, now we got this concept. Sir, Sun is having 2 pence. Closing stock of Sun 2 pence. ₹12 पे record हुआ. And its cost is ₹10. So that 2 rupees is unrealized profit. So ₹4 is unrealized profit. Sir, now we understood it. Unrealized profit. Sir, minimum 5 times ये repeat करो. Receiving department, opening stock and closing stock includes unrealized profit. Receiving department, opening stock and closing stock includes unrealized profit. Receiving department, opening stock and closing stock includes unrealized profit. Sir, receiving department, opening stock and closing stock includes unrealized profit. Sir, receiving department, opening stock and closing stock includes unrealized profit. And this profit, who earned this profit? Who earned? Sender's department show. Sender's department profit included in opening and closing stock of receivers department. सेंडर का प्रॉफिट था सर, वो सेंडर को ₹2 प्रॉफिट हुआ. किसके स्टॉक में इंक्लूड हुआ? सन के क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हुआ. सो सेंडर डिपार्टमेंट प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द रिसीवर्स डिपार्टमेंट. सर, किसका स्टॉक? सेंडर का? नो, रिसीवर का. प्रॉफिट किसका? सेंडर का. स्टॉक किसका? रिसीवर. प्रॉफिट किसका? सेंडर. ओके सर, नाउ वी गॉट दिस कॉन्सेप्ट. समझ में आया ना बेटा? जल्दी स्प्रेड करने का नॉलेज. क्या नॉलेज स्प्रेड करना है जल्दी से बताओ, और जल्दी से अपने फ्रेंड्स को बताने का ये सेंटेंस. किसका प्रॉफिट? सेंडर का प्रॉफिट. किसके बुक्स में होएगा? रिसीवर के ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक के. ये सब पूरा क्लियर हो गया सर. ये हो गया डिपार्टमेंटल. ये समझ में आया तो पूरा डिपार्टमेंटल इजी है. This is a concept in departmental accounts and branch में stock reserve concept. This concept is called as stock reserve. Unrealized profit. किसका स्टॉक? सेंडर का? नो, रिसीवर का. सो प्रॉफिट किसका? रिसीवर का? नो, सेंडर का. किसी का प्रॉफिट? डैड का प्रॉफिट, सन का स्टॉक. डैड का प्रॉफिट, सन का स्टॉक. डैड का प्रॉफिट, सन का स्टॉक. डैड कौन? सेंडर. रिसीवर कौन? सन. रिसीवर के स्टॉक में छुपा हुआ है डैड का प्रॉफिट. सर, घुस गया, पूरा दिमाग में घुस गया सर कॉन्सेप्ट. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. डैड का प्रॉफिट, सन का स्टॉक. डैड का प्रॉफिट, सन का स्टॉक. हु इज डैड? बेटा सेंडर इज डैड. हु इज रिसीवर? सन इज रिसीवर. चलो लिखो कमेंट सेक्शन में. गॉट द कॉन्सेप्ट बेटा? चलो लिखो कमेंट सेक्शन में. व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज नथिंग बट सर सेंडर का जो प्रॉफिट होएगा वो इट इज इन द बुक्स ऑफ रिसीवर्स डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. सर, नाउ वी आर गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट. इज वेरी सिंपल सर. एकदम इजी है. एकदम इजी कॉन्सेप्ट सर, एकदम इजी. Or sir, this is a departmental account. Why students are not getting this? Because they are not getting the concept of unrealized profit. संकेत सर के स्टूडेंट, डरने की जरूरत ही नहीं है. सब पूरा समझ में आ गया सर. बल्ले बल्ले हो गया पूरा. यस, पूरा समझ में आ चुका है. Whose stock? डैड का या सन का? सन का सर. Whose profit? डैड का प्रॉफिट. रिसीवर्स डिपार्टमेंट. चलो लिखो कमेंट में. लिखो, कौन देख रहा है? चलो जल्दी लिखो कमेंट सेक्शन में. रिसीवर्स प्रॉफिट इन सेंडर्स, बेटा सॉरी, सेंडर का प्रॉफिट इन रिसीवर स्टॉक. सेंडर का प्रॉफिट इन रिसीवर स्टॉक. यस, लिखो. कितना हुआ डैड को प्रॉफिट? ₹2 हुआ ना. 10 का 12 में बेचा था
डैड का प्रॉफिट 2, स्टॉक किसका, सन का, कितना स्टॉक बचा, 2 स्टॉक बचा सर, 2 पेन का कितना रुपया, 4 रुपया, 44 रुपीज टोटल प्रॉफिट है दोनों का मिला के, 20 प्लस 24 44 में से एक्चुअल कितना, अरे एक्चुअल जितना बाहर वालों को बेचा, कितने में बेचा, 8 पेंस, कितने में बेचा, 15 में बेचा, 15 में बेचा, लिया कितने में डैड ने, 10 में, तो डैड को कितना ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ, 5 इंटू 8 पेंस, 40 रुपए का प्रॉफिट सर, फिर दिख रहा है 4 रुपीज एक्स्ट्रा, 4 रुपीज को क्या बोलेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट, किसका प्रॉफिट है, अरे सन के क्लोजिंग स्टॉक में डैड का प्रॉफिट छुपा हुआ है, सन कितने में बता रहा है, 12 रुपए में, लिया था कितने में, 10 रुपए में, 12 में क्यों बता रहा है, ओके वो सर अभी एक दूसरे को इंटरनल ट्रांसफर किया ना, डिपार्टमेंटल में कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर किया, डैड को भी प्रॉफिट होना चाहिए ना, सन ही पूरा बेचेगा तो कैसे चलेगा, तो डैड ने 12 रुपए में बताया, सन ने 15 रुपए में बताया, दोनों ने अपने आपस में प्रॉफिट लिए, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये कैंसिल करना है, ओवरऑल प्रॉफिट को कैंसिल करना है, हमारा काम सिंपल है, वी हैव टू कैंसिल दिस प्रॉफिट, अनरियलाइज प्रॉफिट, सर वेरी इजी कॉन्सेप्ट, इतना बढ़िया बताया ना सर आपने, अभी दिमाग में से कभी जाएगा नहीं ये कॉन्सेप्ट, एकदम इजी है। ओके, थैंक यू धनश्री जी, यू हैव एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट वेरी इजी, यस एकदम इजी છે વિકી સા, very good, very good, very good, very good, everyone answered. चलो, receiving department's opening stock and closing stock includes unrealized profit and of senders department. Very good, एकदम कड़क बेटा, मजा आ गया आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते करते। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। सर ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़ों को समझता नहीं, पहले ही बोल देता हूँ, व्हेन आई वाज इन 11 सॉरी इन इंटरमीडिएट आई यूज्ड टू, मुझे तो ये पसीना आता था, बाप रे लोडिंग मतलब क्या, फिर मैंने एक बार बैठ के ये पूरा का पूरा सॉल्व किया कि लोडिंग मतलब क्या, हमारी फैकल्टी बेटा डायरेक्टली बताती थी, इसमें इसका प्रॉफिट है क्या, क्यों क्यों आया, कुछ नहीं, ये होता है वैसा ही कैलकुलेट कर, संकेत सर विदाउट लॉजिक कभी नहीं बताएगा। यस यस, यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, चलो लो 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 लो, स्क्रीनशॉट चाहिए ले ना बेटा, आपके लिए तो है, यस लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो डैडसन कॉन्सेप्ट, राइट डाउन इट इन द 100 पेजेस बुक है बेटा, 100 पेजेस के बुक में लिखने का, कभी भूलने का नहीं ये कॉन्सेप्ट। ब्रांच अकाउंट्स, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, प्रोसेस कॉस्टिंग, इन कॉस्टिंग ऑल्सो दिस कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, याद करोगे आप लोग मुझे दुआओं में कि सर ने ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, रिसीवर्स डिपार्टमेंट का स्टॉक था और डैड ने मतलब सेंडर डिपार्टमेंट का ये भेजा था, यस यस यस। चलो हो गया, देखते हैं अभी पहला क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो क्या, चलो। यस यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ टोटल प्रॉफिट 44, सर वाई टू कैंसर, अरे भवानी जी, अरे प्रॉफिट हुआ नहीं तो लोगों को क्या बताएंगे, जो प्रॉफिट अपना एज नहीं, एक दूसरे को, अभी तू तेरे मॉम को माल बेच के बोलेगी क्या मैं प्रॉफिट कमाया, मैं प्रॉफिट कमाया, ऐसा होता है क्या बेटा भवानी? Whether you will internally transfer goods and you will tell to yourself, yes, I'm in the profit. No, beta. When we get the profit, when we sell it to outsider, she is asking me why we are canceling this. अरे बेटा internal profit we have to cancel ना बेटा, तो इतना बताया क्यों? अल्टीमेटली सब होने के बाद पूछ रही है राम की सीता कौन है, ऐसा नहीं करने का बेटा भवानी, ट्राई टू ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट, कितना इजी किया। नाउ शी इज आस्किंग मी सर व्हाट इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीस थिंग्स I already explained this concept, Bhavani ji. I already explained all these concepts in English only, that dad is not getting the profit because dad is only transferring goods to son. So if in son's closing stock, if there are some goods, it is not at actual profit. So 12 rupees is not the actual closing stock value. It is should be 10.
and it inflated your amount of profit, so you have to cancel that 2 rupees profit beta. चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. 1 में सी द क्वेश्चन नंबर 1 is only for your concept clarity. See the question, see the question. Question number 1, question number 1. Yes, now tell me. Goods are transferred to department P to department Q at a price of 50% above cost. Now how to solve this? 50% above cost means beta cost is above cost. So we will assume cost is 100, profit is 50 and selling price is 150. Okay, so this is an internal transfer. P को प्रॉफिट हुआ, दिस इज प्रॉफिट टू P, सेंडर, and closing stock of Q, receiver. It includes stock of 27,000 because it is better, he is recorded at selling price. So what is the profit? 27,000 into 50 divided by 150. 9,000 rupees is the unrealized profit. If in question it is 50% on sales, so you can write this also. If 50% on sales, so beta what is your equation? Cost, profit, sales. So 50% on sales, so we will assume 100 to sales. किसको एज्यूम करेंगे? 100 सेल्स को, प्रॉफिट 50 एंड कॉस्ट इज 50. सो आंसर विल बी 27,000 into 50 upon 100, 13,500. See the difference beta. If it is on cost, you will get the answer 9,000. If it is on sales, you will get the answer 13,500. So write down both options. Okay. So exam में याद रखना, you have to check whether it's on cost or sales. If it is on cost, beta, you have to do 50 upon 150. It's a 50 upon 150 into closing stock. If it is on sales, beta, 50 upon 100. Okay. So it's very simple. So you just have to check it is on cost or it is on sales. If it is on cost, 50 upon 100 plus 50. If it is on sales, it is directly divided by 100. तो देखो एग्जाम में ये ध्यान में आना चाहिए, you have to check कि whether it is on cost or whether it is on sales. तो यदि cost पे होगा तो बेटा equation will be cost को 100, 50, selling price 150. If it is on sales, 100, 50, 50 is your cost. So check ये किसके ऊपर है. तो क्वेश्चन में चेक करना बहुत बहुत जरूरी है रे मेरे फ्रेंड्स, याद रखो ये. ठीक है. You got the difference beta दोनों का. देखो आंसर, let's check the answer. ये 9,000 is the answer. 9,000 is the answer. 50% on cost. You got the difference. चलो बताओ. चलो in the same question, tell me if it is on 25% on cost. चलो check के बोलिए मुझे. If it is 25% on cost, चलो tell me the answer. Let's see who is answering fast. Same question. 25% on cost. Tell me the answer. चलो 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 बेटा जल्दी बताओ. मेरा तो हो गया सर. Yes, मेरा हो गया. 25% on cost. What is the answer? You can write over there 25% on cost. तो आंसर क्या आया था? After that रिवीजन के लिए. Yes. What is the answer बेटा? बता आंसर. जल्दी से आंसर बताओ रे मेरे दोस्तों. Who answered very fast?
हाँ 25% ऑन कॉस्ट इज 27,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125 5,400. Who answered very fast? Himanshu Pathak. प्रथम दवे रॉन्ग आंसर. नितिन शुक्ला रॉन्ग आंसर. 27,000 इंटू 25% ऑन कॉस्ट मीन्स 25 अपॉन 125. अब भी तो एक्सप्लेन किया ना रे मैंने. वो आंसर 6750 रे. प्रथम दवे कैसे रे बेटा तो आंसर दे रहा है. सिंह राजू कुमार कैसे आंसर दे रहा है रे. नेक्स्ट चलो 30% ऑन सेल्स प्राइस. चलो 30% ऑन सेल्स बताओ. Yes, Neha Ben. I'm receiving your answers. Don't worry, don't worry. कौन बताएगा ये आंसर. 27,000 इंटू डायरेक्ट 30 अपॉन 100. विष्णु स्वामी आंसर इट फास्ट. विघ्नेश ने आंसर दिया. अक्षय कुमार अरे क्या कर रहा है रे बेटा. ए अक्षय कुमार नाम में इतना बेटा अक्षय कुमार और का हरकतें बेटा शक्ति कपूर जैसी कुछ भी आंसर्स देता है. 6231 किसने दिया. अक्षय कुमार 30% ऑन सेल्स रे. सेल्स होगा तो 30 अपॉन 100 बताया ना मैंने डायरेक्टली. कॉस्ट होगा तो 25 अपॉन 125. अरे सीतम राजू ऐश्वर्या. यस बेटा ऐश्वर्या. Why are you answering 6230.7? It's 8,100. Akshay Kumar and though only 2 students answered wrongly. चलो ओके. तो बेटा प्लीज या डोंट गिव रॉन्ग आंसर्स. तो ये था हमारा एकदम इजी प्रॉब्लम इलू 1. So you now understood the concept of sir. Which concept you understood? Yes, अनरियलाइज प्रॉफिट. किसका स्टॉक किसका प्रॉफिट. सेंडर का स्टॉक रिसीवर का रिसीवर का स्टॉक सेंडर का प्रॉफिट. सर वन क्वेश्चन इज देयर. नाउ यू ओनली टेल मी हियर. यस सी आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन ओनली. यस आई डोंट वांट ब्रेक के पहले ये सोचो. ओनली आई एम गोइंग टू आस्क यू द लॉजिक. See only 2 paragraphs, huh, beta. What you have to do? Only 2 paragraphs. Don't read this paragraph. Okay? Don't read this paragraph. I will tell you after break this paragraph. Just calculate. Department P sells goods to S at 25% on cost and to Q 15% on cost. Okay? Chalo. PSQ. I will write it like this. PSQ. अभी P को तो नहीं ट्रांसफर करेगा ना. P sold goods 25% on cost and 15% on cost to Q. Okay. Department S. Now you can draw this diagram. Department S sells goods to P at a profit of 20% on sales. S को ट्रांसफर नहीं करेगा and to Q 30% on sales. And department Q transfers to P 20% on cost and 10% on cost to S. Q को ट्रांसफर नहीं करेगा. So this is a chart. Okay, I made this chart beta only for your understanding purpose. And here is your closing stock. क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो. सो 18,000. तो 18,000 को क्या करोगे सोच के बताओ. वेदर 25 अपॉन 100 और वेदर 25 अपॉन 125. दैट यू हैव टू थिंक. ओके दिस इज अ चार्ट एंड ब्रेक में आपको ये करना है.
चलो ब्रेक में आपको ये करना है इलस्ट्रेशन नंबर 5. डोंट सी दिस कॉलम बेटा, यू जस्ट कैलकुलेट अनरियलाइज प्रॉफिट. ओके, सो ये टेबल है, यू हैव टू टेल मी द आंसर आफ्टर ब्रेक. ओके, पी को कितना प्रॉफिट हुआ, एस को कितना प्रॉफिट हुआ, क्यू को कितना प्रॉफिट हुआ, ब्रेक के बाद मुझे बताओ. यस. चलो 25% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट सेल्स पे. चलो टेल मी, जल्दी जल्दी बताओ ब्रेक के बाद. चलो टेक अ ब्रेक.
बैक वंस अगेन, चलो 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 जुड़ जाइए जल्दी से. Yes, my dear students. So in first half we have seen better what we have seen. Yes, how many of you got the answer? Very good. So now I'm going to tell you the answer of this question. Just Jamsina is saying, sir, I should leave for my ACCA classes. No problem, beta. Okay. Sanjana Sharma is saying, sir, I'm telling you the honestly, I always face the problem while doing cost on sales, but now I understood this perfectly. Thank you so much. Yes, beta. Thank you. So this time my answers might be a right answer. Okay. Let's see what is the answer. Yes, guys. Yes, guys. Let's see the answer. So 18,000. I will do this on this question itself. चलो जल्दी से question पे मैं कर लेता हूँ फटाफट फटाफट. Let's see what is the answer. So 18,000 into 25 divided by 125. 14,000, sir. 14,000 is 15% on cost. So 15% on cost is 15 upon 115. 48,000 is 20% on sales. So I will directly multiply by 20%. And 38,000, sir. 38,000. And 12,000 is better. 20% on cost. 20 upon 120. And 10 upon 110. So guys, my answer is very simple. 18,000 into 25 divided by 125. This is 1826. 9,600. 11,400. This is 2,000. And this is 727, sir. So now how to take the total? 3,600 plus 1826. Horizontal total you have to take. 5426. And this is 11,400 plus 9,600. The correct answer is 21,000. And last one is 2,000 plus 727. 2727. 5426. Yes, 21,000 and 2727. I'm getting the correct answer, sir. How many of you got the correct answer, sir? How many of you? Take horizontal totals. Very good. Many of you got the correct answers of 5426, 21,000 and 2727. Yes, good, 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 good. I'm giving you one more question to try. I'm not going to answer your question. Answer to this question. Yes, beta. Come to. Yes, I got the correct answer. Very good. पुनीत को मिला, केतन को मिला, भूमिका got the correct answer. Sudhanshu, very good beta. Rushita, very good. Kanchan Kumari, very good beta. Neha Patel, very good. So don't solve this paragraph. Yes. This one and this one. Chalo. I'm not going to tell you the answer, my friends.
I'm giving you exactly 3 minutes. ठीक है, कुमारी पूजा, तुझे तेरी गलती समझ में आ गई ना? यस। चलो, टीवाई के नंबर 2, टिक टिक जी, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को 3 मिनट दे दो। 3 मिनट्स, टिक टिक जी, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स। यस, चलो 3 मिनट्स, सॉल्व करो फटाफट। ओवर। चलो 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 फास्ट। ओवर। यस, व्हाट इज द आंसर नाउ? X transfers 25% on cost to Y, so 25 upon 125. Here 10 upon 110, 14,000 into 15%, 12,000 into 20%.
देन डिपार्टमेंट हेड का कितना होगा 20/120 and 25/125. So now tell me the answer. फटाफट फटाफट चलो बोलो 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 बोलो. क्या आंसर है बेटा? 3,000. बहुत बढ़िया बेटा. 11,000 इंटू 10. 1,000 रुपया. 4,000 रुपया आएगा इधर. 14,000 इंटू 15%, 2,100. 12,000 इंटू 20% कितना आएगा सर? 2,400 इधर आएगा. 2,400 प्लस 2,100. दिस इज 4,500. And I'm getting 6,000 into 20/120. This is 1,000, sir. And 5,000 into 25 divided by 125. So this is 1,000. I'm getting the answer 2,000. So how many of you got the correct answers? Let's check the answer. X 4,000, 4,500. Yes. Faraji, you got the wrong answer. Do you understood कि mistake क्या है? Yes, Faraji, you got 4,500. No, you got the 4,226. So you are not correct. Okay, very good. I don't think now these questions are very easy to you. So whose stock and whose profit? Yes. Not feeling well. Okay. Can you calculate for this? So this is the last question that I'm giving you. Question number one. Question number one. Last question to you. चलो solve कीजिए. Now only 3 minutes, हाँ बेटा. Now only 3 minutes. फटाफट कीजिए. Send your answers, beta. Send your final answers. Very good, beta Mariam. सेंडर का प्रॉफिट, रिसीवर का स्टॉक.
First answer by Pratham Dave. चलो over. Department A sells goods to Department B at a profit of 50% on cost. So 50 upon 150. To C, 20% on cost, 25% and 15% on sales. And here 30% and 40% on cost. So 45,000 into 50 divided by 150. I'm getting the answer 15,000 over here. 42,000 into 20 divided by 120. 7,000. So here 22,000. A का 22, 40,000 into 25% memory plus 10,000. 72,000 into 15% memory plus 10,800. Memory recall 20,800. Zero कर दो memory. 39,000 into 30 divided by 130 memory plus 9,000. And here 42,000 into 40 divided by 140 memory plus 12,000. So memory recall is 21,000. 22, 20,800 and 21,000. Yes, are you getting the same answer or different answer? Sitham Aishwarya ji, you got the wrong answer. Yes. सबसे पहले भेजा था 22,800. Yes, प्रथम very good बेटा. प्रथम का पहले करेक्ट था, बाद में बदल दिया वापस, पता नहीं प्रथम. Why are you doing these things? सूरज ने बराबर भेजा. Yes बेटा, we have to show working notes. Sir, can we draw the format horizontally? नहीं बेटा. Draw the format vertically on 2 pages. भूमिका हॉरिजॉन्टली बहुत लाइंस को बहुत प्रॉब्लम हो जाता है इसलिए. यस चलो, सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस सेकंड कॉन्सेप्ट. व्हेन गुड्स आर सेंड बाय द सेंडर डिपार्टमेंट एट कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज. कॉस्ट प्लस सम परसेंटेज. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. हाँ, क्वेश्चन नंबर सुमन एंटरप्राइजेस. चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 6. So everyone now got the concept? Yes, got the concept beta. Chalo everyone, yes, tell me yes or no कि you got the concept. Are you finding this topic is difficult one? Because departmental account, many students are finding this chapter very difficult one, because this chapter was previously, it was in the advanced accounts. Now they moved it up in new syllabus. New syllabus means now again new syllabus is going to introduce. I'm telling about the intermediate course. Before in 2016-17 this chapter was in the old study material in advanced accounts. Now ICI thinks your IQ level is also day by day it is increasing, so they moved it from advanced accounts to accounts level, and might be now they move it from the foundation mein aa jayega. So I don't know exactly, but still I don't think this chapter is very difficult one once you got the concept about the what is the profit concept. Unrealized profit concept. Unrealized profit is nothing but it is a receivers department stock and senders department profit. Okay, senders ka profit is included in the. Yes.
Monica Jangra ji saying ki sir I am new in your live classes today. Yes beta, welcome to ICI classes. एक ही है बेटा, देखो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि व्हेन आई ज्वाइन दिस ICI क्लासेस मेरा एक ही महत्व था कि आप लोगों तक व्हाई यू हैव टू पे अननेसेसरी अमाउंट जब आपको ICI इतना अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है तो. एंड ICI इज टेकिंग बेटा ऑल एफर्ट्स कि आप लोगों को कैसे. देखो मेरे टाइम पे मुझे याद है इन 2000 समथिंग अराउंड 2002 2003 व्हेन आई वाज डूइंग माय फाउंडेशन कोर्स. ओके 2003 4 4 होगा शायद से, 4 में था. हाँ फाउंडेशन 4 और 5 में मैंने एग्जाम दिया था. यस तो आई रिमेम्बर कि ICI का स्टडी मटेरियल है ना हम लोगों को घर पे आता था. कैसे आता था पता है आपको? बाय कुरियर ICI मटेरियल. And in parts, it's not like one full book we received at that time. No, it's for example I received departmental and branch accounts from ICI. Then after 7-8 days I got branch accounts के बाद yes investment chapter. So it's not like you are getting one study material one time. No, it was in parts. But now I have seen how ICI improved. I'm telling you, in the batch number 1 in 2000, something around 2021, when there was batch number 1, I got only 3 sessions, only 3 sessions. And at that time, हम लोगों के लिए भी ये नया कॉन्सेप्ट था कि व्हाट इज वर्चुअल क्लासेस. और ICI ने बेटा ये कंटिन्यूएशन में रखा फ्रॉम लास्ट 7 बैचेस. इट्स नॉट वेरी इजी कि आप लोगों के बैचेस लेना है. एंड अल्टीमेटली आई नो कि थोड़े से लेक्चर्स कम है बट उसके ऊपर भी कुछ ये होगा ना बेटा, कुछ ना कुछ तो होगा इन फ्यूचर कि यस आप लोगों ने सपोज बताया कि और प्रैक्टिस की सेशंस की जरूरत है, ये है वो है, होगा इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा. बट जो आपको दे रही है ना ICI, मैं यस्टरडे ओनली आज आपको बोर्ड ऑफ स्टडीज के फैकल्टीज के साथ डायरेक्टली इंटरेक्शन होती है. हमारी सीमा मैम थे उस दिन, आशा मैम थे. तो ये जो चीज है ना जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी होता है, ICI के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सेशन होंगे, हम लोगों के सेशंस है और हम लोग जो साथ में माहौल किया हुआ है कि भाई अच्छी चीजें आपको देनी है. तो आप लोग सोचो कि यू आर वेरी लकी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है. कौन देता है भाई? आज एक एक सब्जेक्ट का 15,000 रुपया लेते हैं अल्टीमेटली. और ये इससे आपको मिलता क्या है कि ओनली कलर बुक्स और ये सब मिलेगा. पर ये जो आपको हम लोग स्टडी मटेरियल दे रहे हैं इसी में से क्वेश्चंस आने वाले. यू टू इंप्रूव योर कॉमन सेंस, कंसिस्टेंसी लेवल, ये 2 चीजें आपको जरूरत है. डू यू थिंक हमने कभी भी मैंने शॉर्टकट मारा है, कोई कॉन्सेप्ट लिया नहीं है? नेवर. वी ऑलवेज ट्राई टू गिव यू बेस्ट थिंग्स. बट नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितना भी आप लोगों को करवाया तो आपको खुद से भी बैठना ही पड़ेगा एट द एंड. ठीक है चलो. यस मेसर सुमन एंटरप्राइज. नाउ सी, नाउ थिंक लॉजिकली. इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आते हैं. यस कांचन, बाय बेटा. मेनी स्टूडेंट्स हैव देयर आर्टिकलशिप, सो 9 o'clock को उनको लीव करना पड़ता है. आई नो दैट. यस मेसर सुमन एंटरप्राइज has 2 departments, finish leather and shoes. कितने डिपार्टमेंट है बेटा? Now tell me who is dad and who is son in this case. You only apply the logic. Who is dad and who is son in this case? 2 departments. Who is dad and who is son? Apply logic. Shoes are made by the firm itself out of leather supplied by the leather department at its usual selling price. Usual selling price. ठीक है. So yes, leather is dad and shoes department is son. Very good beta. Hari Nisha ji, Hari Nisha beta. Yes, good. That leather department is dad and shoes department is son. So here you can write shoes department stock. Yes, write down this. Includes unrealized profit of
फिनिश लेदर। किसका स्टॉक? रिसीवर का स्टॉक। शूज डिपार्टमेंट, यू कैन राइट रिसीवर। किसका प्रॉफिट? सेंडर। सेंडर, सेंडर का प्रॉफिट रिसीवर डिपार्टमेंट में। यस। चलो, सभी चैप्टर इजी है रे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, ओपनिंग स्टॉक, वेयर यू आर गोइंग टू राइट इट डेबिट। इसमें लोडिंग होगा, लोडिंग। अनरियलाइज प्रॉफिट, व्हाट इज लोडिंग? अनरियलाइज प्रॉफिट। शूज डिपार्टमेंट है ना। परचेसेस यू आर गोइंग टू राइट डेबिट, सेल्स क्रेडिट, ट्रांसफर टू शूज डिपार्टमेंट। सो फिनिश लेदर में क्रेडिट आएगा बिकॉज सेंडर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो गिवर and shoes department receives it, so receiver, you can write like this, receiver giver relationship. So who is receiving? Yes beta, internal transfer. Shoes department receives it, so for shoes department is like purchase, and for finish leather dad it's like sales. अरे किया नहीं क्या हमने? डैड का सेल, इधर परचेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, selling and rent warehousing P&L debit, and stock credit. Okay, the stock in shoes department consists of 75% leather and 25% other expense. So stock में डैड से आया हुआ 75%, so only 75% includes loading. Other expense not includes loading. You can write this कि जो डैड से आया स्टॉक, ओके, सो दिस स्टॉक only 75% into loading GP ratio. Closing stock, full closing stock is not transferred from dad, only 75% transferred from dad. देखो देखो स्टॉक जो है ना वो दो पार्ट्स का बना हुआ है। एक ये शूज डिपार्टमेंट का स्टॉक दो पार्ट से बना हुआ है। वन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम डैड, करेक्ट, that is from finished leather, and one own manufacturing cost, because own manufacturing cost is also there. Okay, so remember own purchases is also there, it's not only dad se aaya hua purchase hai. So own manufacturing cost is 25% and 75% cost out of rupees 100. If I incur 100 rupees, if I am a shoes department, if I incur 100 rupees, out of this 100, 75 I received it from finish leather, and other expenses is 25. So only finish leather part consists of beta loading. Okay, so 75% consists of loading. You got this concept? देखो जितना 75% है ना उसी में लोडिंग छुपा होगा, नॉट पूरे इसमें, क्योंकि खुद का भी खर्चा डैड से तो आया और मैंने खुद का भी खर्चा किया। खुद के खर्चे में नो लोडिंग, ओनली जो डैड से आया उसमें लोडिंग। करेक्ट है, हाँ या ना? ओके, करेक्ट है बेटा। चलो ठीक है। यस सर। नाउ फिनिश लेदर का लास्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक का रेशो, जीपी रेशो इज 15%। 15% ये मेरा स्टॉक था, 15%। कितना? 15%।
48375 48375 कितना लोडिंग है बेटा? 4,30,000 into 75% into 15%. 48375. You can check 48375. Okay? Yes, beta. And here ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. Calculate GP ratio. Last year का, current year का, we have to calculate. We have to calculate GP ratio of current year. How to calculate? Wait. So you got this concept. So see, shoes department stock includes DARS का profit. Okay, finish leather department का profit. Opening stock is of 4,30,000. So 4,30,000 into, but full amount is not inclusive of beta sender department stock. It is only 75%. And GP ratio of last year, because it's an opening stock. Current year GP ratio we will calculate. Current year GP ratio we are going to calculate. Okay, very easy, very easy. Yes, easy check है. चलो. So क्या याद रखना है आपको? शूज डिपार्टमेंट का स्टॉक, दैट डिपार्टमेंट का प्रॉफिट, फिनिश लेदर का प्रॉफिट. अभी स्टॉक कितना है? 4,30,000. पूरा का पूरा लोडिंग है क्या? नो, ओनली 75% इज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. ओके, so 75% stock consists of unrealized profit. And what is the GP ratio of last year? It's 15%. So multiplied. And sir, what is about current year closing stock? We will calculate. Closing stock का current year का GP ratio we are going to calculate. So don't worry. Okay. So till now any difficulty? Everything is clear. Everything, whatever you understood, write down in the comment section. क्या आपको समझा है comment section में लिख दो. चलो फटाफट. Whatever you understood, write it in the comment section. 15% on sales beta. If nothing is given, it is 15% on sales. Good question. Himanshu. 15% on sales. Wait, Himanshu. Don't be in hurry beta. Yes. Go step by step beta. Go step by step. चलो बेटा, जीपी रेशियो से बरकतुल्ला जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. जीपी रेशियो हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज, सिर्फ 75% तो स्टॉक हुआ, उसको जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ना. हमें मल्टीप्लाई तो बेटा प्रॉफिट के रेशियो के साथ करना है. प्रॉफिट 3 रुपया था ना, अनरियलाइज प्रॉफिट 2 रुपीज था. So 2 rupees is our unrealized profit, 10 and 12. So we are not multiplied by beta 12 rupees or 10 rupees. We multiply by profit. Profit is dad का profit कितना था? 2 rupees. Okay, so we will multiply by GP ratio for unrealized profit. कितलू easy છે बेटा. Whatever you understood, write in the comment section. Whatever. एवरी वन ऑफ यू हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कोई दिक्कत नहीं. यू कैन राइट इट इन हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती में लिखो, बट डोंट टाइप इट इन गुजराती बिकॉज गुजराती आई कैन रीड, बट गुजराती आई कैन अंडरस्टैंड. मारवाड़ी भी लिख सकते हो. Sri Lakshmi ji, unrealized profit on opening stock is calculated on the basis of 15%, where unrealized profit on closing stock to be calculated based on the current year gross profit. Okay, but beta, you have to add one sentence. Opening stock of shoes department includes loading, not 100%. It's only 75% which is received from finished leather. And after that GP ratio, okay, that you have to mention. मोनिका ने एकदम सिंपल लिखा, जीपी ऑफ 15% इज ऑफ लास्ट ईयर, बट बाकी कुछ लिखा ही नहीं. देन मुझे अभी भी नहीं, मोनिका का तो ठीक था. श्रीलक्ष्मी इज ठीक, इट्स 70% यू रिटर्न बेटा. आई वांट फुल आंसर. सर शूज डिपार्टमेंट स्टॉक इंक्लूड्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ फिनिश लेदर. यस, राजू कुमार, बेस्ट, मस्त. ओनली 75% ऑफ स्टॉक इंक्लूड्स लोडिंग, बेस्ट. एंड 15% ऑफ जीपी रेशियो ऑफ लास्ट ईयर, बट इन विच स्टॉक बेटा? Raju Kumar, you are not mentioned which stock, opening, closing, you are not mentioned that, but perfectly written. Good, good beta. Bhumika ने लिखा है, opening stock and closing stock of shoes department includes loading of 75% नहीं है बेटा. It
कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट बोल सकते हो, एलिमेंट ऑफ फिनिश लेदर. सो लोडिंग बोलने से अच्छा भूमिका, what you have to mention, opening stock and closing stock of shoes department includes element of finished leather 75%. ये more correct answer. Loading is not 75%. Okay, its element is 75%, loading is 15%. Okay, so आपका थोड़ा सा गलती हुआ है. Loading is 15% in opening stock. Current year calculate. So Bhumika, one line difference, but wrote correctly. So it's not loading 75%, it's element of 75%. So rectify and send it correct answer. Okay, beta? Yes. Opening stock of shoes includes 75% of leather department. Mariam, only one line. Beta, very partial answer. Stock consists of only 75% from that department and 25% other expenses. By Said. Said ने लिखा है. Last year GP ratio 15%. Closing stock, but better you have not mentioned what is loading, what is element. Nothing is mentioned. Said in your answer. Not getting the correct one. अभी भी अच्छा आंसर नहीं मिल पा रहा है. भूमिका ने एक उम्मीद किया था कि बराबर लिखा था भूमिका ने, बट बेटा उसने वो वर्ड गलत लिख दिया. 75%. इट्स एलिमेंट. ठीक है हरिनिशा. ओके ओके आंसर. अभी भी अच्छा आंसर नहीं मिल रहा है. ओपनिंग स्टॉक 75% इज नॉट लोडिंग बेटा. अक्षय कुमार 75% इज अ एलिमेंट. Loading is 15%. अनुबाला ठीक है. नो परसेंटेज आर मेंशन बाय अनुबाला जी. हाँ, नाउ भूमिका wrote it correctly. 75% includes. Okay. Yes, Yashika, I received your answer. Stock of shoes department includes 75% of transfer from finished leather. So 75% consists of loading GP of last year in the opening stock. Beta Yashika, you are not mentioned in which stock. Opening stock includes 15%. Closing stock we have to calculate. But Yashika best answer. So winner is Yashika. Okay. हाँ, एलिमेंट ऑफ 75%, ये सेंटेंस होना चाहिए. चलो अभी ध्यान देना. यस, अभी ध्यान दीजिए. आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दी नाउ what you have to write, but yes, now you understood the concept. Every one of you understood the concept बेटा. सबको समझ में आया? Yes. Why many few students are answering? I really don't understand. बाकी students क्यों नहीं टाइप कर सकते? At least suppose I read your answer or not is the second question. बट एटलीस्ट ट्राई टू टाइप इट ना बेटा. लाइव सेशन का फील लीजिए. ऐसे बैठे रहते हो, कीर्तन चल रहा है क्या? कोई बाबा आया है जो आपको ज्ञान देने वाला है? हाँ, टाइप कीजिए ना फटाफट फटाफट कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है. एवरीवन सेंड मी आंसर्स. इतना वो एप्लीकेशन बनाने को कितना पैसा खर्चा किया होगा आईसीआई ने? सोचो कभी कि आप हमारे से इंटरेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली ऑन दिस ऐप, ऑन यूट्यूब पे भी लाइव चैट में तो नहीं कर रहे हो. ये सेपरेट एप्लीकेशन को कितना पैसा खर्चा किया रहेगा आईसीआई ने? सोचो इस बात को कभी. आंसर्स ही नहीं देने. ओनली 7-8 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स के ऊपर लेक्चर देख रहे. ओनली 8 स्टूडेंट्स आर आंसरिंग. हम लोग बैठे रहेंगे सर, आराम करेंगे. हमें किधर इतना टाइप करते बैठेंगे? छोड़ो ना, फिर से अपनी उंगलियां दुखने लगेगी. ओके, कोई बात नहीं, बट प्लीज आंसर इट. यस, चलो राइट डाउन. क्या नाम है? सुमन एंटरप्राइज. सुमन एंटरप्राइज. ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट.
for the year ended. For the year ended. स्पीड नहीं मैच होता है बेटा किरण, कौन सा स्पीड नहीं मैच होता है आपका टाइपिंग का? डोंट टेल मी बेटा, हम भी वो उम्र से गए हैं, कितना चैटिंग हमने भी किया होगा। सो डोंट टेल मी कि आप लोगों का स्पीड मैच नहीं होता है, डोंट टेल मी। ओके, तो चैटिंग तो सब लोग करते हैं भाई, कौन बोलता है नहीं करते करके? हाँ, इतना तो सबने किया हुआ है भाई। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। ओके, सॉरी 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 सॉरी, particulars. Yes, three departments: finish leather, shoes, and total. Yes, three columns you have to draw: particulars, finish leather, shoes, and total. Particulars, finish leather, shoes, total. टू 2003 है, सॉरी 2003, हाँ, नॉट 2002, 2003 लिखा ना हमने। ओके, आवाज આવે છે। नेक्स्ट, ओवर। अरे मजाक कर रहा हूँ किरण, फ्रेंड्स लोगों के साथ तो किया ही होगा ना। ओके चलो, यस। बेसिस की क्या जरूरत है भाई? बेसिस देयर इज नो नीड ना हियर। टू ओपनिंग स्टॉक, 30,20,000, 4,30,000. Calci we will use at the end. To purchase, to purchase 1 crore 50 lakhs, 2,60,000. ओके बेटा फरा, बाय। सेल्स, लिविंग फॉर ऑफिस बोल के जाओ, अच्छा लगता है। सेल्स કેટલો છે બેટા? 1 crore 80 lakhs છે। शूज का कितना बेटा? शूज का 45,20,000। यार मैं कैलसी में क्यों लिया रे? नेक्स्ट, ट्रांसफर टू शूज डिपॉइंट, तो हाँ, सी इंटरनल ट्रांसफर डोंट राइट इट इन टोटल कॉलम। Never consider internal transfer in total column. Why? Because total is for whole department, and whole department internal transfer we never record. Okay, जब we are calculating overall profit, so never calculate overall profit के टाइम पे internal transfer dash dash. Don't write it anything in the column. Okay, so red pen to internal transfer shoes and here also by internal transfer. કેટલો છે રે ઇન્ટરનલ ટ્રાન્સફર?
30 lakhs. शूज को मिला, फिनिश लेदर goes out. 30 lakhs. Red pen. Don't write it in total column. Dash dash. Next. मनु एक्सपेंस. मनु एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ही, because it's a manufacturing account, like here only 5 lakhs. A total I can take na. Easy total you can take over there. To selling expense, P&L 1,50,000, 60,000, 2,10,000. Easy total. Rent and warehousing. To rent 5 और 3. Easy total 8 lakhs. इधर भी ले सकता हूँ 1,52,60,000. ये रहने दो. ये भी ले सकता हूँ 34,50,000. बाय क्लोजिंग स्टॉक विदाउट कैलसी जो ले आ रहा है वो कर लो. 12, 20 और 5, 17, 20. 12,20,000 और 5 lakhs 17,20,000. ओनली सेल्स का टोटल वो भी आ सकता था 2,25,20,000. ओवर. अरे ऑल टोटल्स ओवर क्या. ओके. नाउ बेटा कैलकुलेट. ओनली इंटरनल ट्रांसफर बेटा हिमांशु. हाँ. देन बेटा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट. चलो जीपी निकालो. जीपी. टेल मी जीपी एंड एनपी ब्रॉट डाउन एंड टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन. चलो 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 जीपी बताओ. $42 lakhs, 50,20,000, 8,30,000, 2,42,40,000. ईमानदारी से मेहनत किया तो अपने आप फल मिलेगा. 50,30,000, 42 lakhs, 8,30,000, 50,30,000. Now profit. करेक्ट है क्या प्रॉफिट? 35,50,000. Whether ICA is getting the same profit? Yes. Any difficulty till now?
Only internal transfer is a new concept. Now, important answer. Chalo, last 5 minutes. Till now, any difficulty? Till now, general expenses is a common expense, beta. Now, after that, you can draw only general P&L. Particulars rupees, particulars rupees. By net profit, 40,20,000 to general expense, 8,50,000. And remaining part, today you will solve remaining part. Today's homework, illustration 4 is your homework. Then TYK, yes, try it. Don't say no. Yes, today's homework, try beta. Please Telegram channel पे update कर देना क्या क्या homework है, any one of you. And TYK3 is similar to finish leather and beta shoes question. So it's similar to ILU 6 किया ना हमने अभी. कौन सा illustration था? 6. हाँ, similar to ILU 6. And I'm not going to tell you now how to calculate GP ratio of the current year. GP ratio is GP upon sales. Okay, this is only the hint that I am giving you. You read the answer and tomorrow I am going to give you the pro forma for GP ratio calculation. One pro forma, ICI का pro forma, उससे एक थोड़ा अलग लेवल का pro forma दूंगा, which you will find very easy. So same answer will be same, but pro forma slightly different. So I will give you the one pro forma how to calculate the GP ratio. तो हम लोग कल देखेंगे. Today I think इतना sufficient है. So today is what is the new concept that you are getting? How to divide your expenses? Calci shortcut. So आज से expenses how to divide. ये क्या हुआ रे? हाँ, आज क्या नया सीखा? Expense how to divide. Common expense. Calci shortcut, sir. Calci shortcut. Many students understood Calci shortcut. Next one, loading concept. What is loading? Unrealized profit. किसमें होगा? Receivers department stock, sender department GP. सेंडर का प्रॉफिट, रिसीवर का स्टॉक, ये एक दूसरे के साथ क्रॉस में जाना है. 15% ऑन कॉस्ट, 15% ऑन कॉस्ट होगा तो 15/115, 15% ऑन सेल्स डायरेक्टली 15/100. ओके, 15/100. सो दैट इज परसेंटेज. ओके, सो ये कॉस्ट पे होगा तो ये, सेल्स पे होगा तो ये एक नया समझा. एंड बाकी कुछ नहीं, बाकी तो हमने अभी जीपी रेशियो एलिमेंट 75%, 15% इज द लास्ट ईयर जीपी रेशियो, करंट ईयर जीपी रेशियो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एट होम बेटा. सो यस, आई होप डिपार्टमेंटल चैप्टर इज वेरी इजी फॉर यू. सो यहाँ पे मेरा ये पहला आज का सेशन खत्म होता है. कल हमारा खत्म हो जाएगा बेटा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड ऑन थर्सडे आई विल टेल यू डिपार्टमेंटल का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और बाकी कुछ नहीं. यस, तो हम लोग थर्सडे को ये टॉपिक खत्म करेंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो, अच्छे से करते रहो. चलो, थैंक यू. यस.